Yes, hello everyone. Very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to all of you. And this is the second class of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. And in our first class, I have told you the topics that we are going to complete. Right? The topics which I will be doing it with you in the class. Right? And the last topic was maintenance, which I have dictated you. That is given under section 144 till 147 of BNSS. Shelly says yes. Okay, that was the last topic that I have dictated, right? Okay, now the topics which is left, which is going to be completed by yourself, now I am dictating those topics कि वो टॉपिक जो अब आपको करने हैं, आपको खुद से करने हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, राइट? हालांकि अगर आपको वो टॉपिक में भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, देन यू आर फ्री टू कंसल्ट मी, आई विल बी ऑलवेज हेल्पिंग यू. ठीक है, तो इसमें लिखो एरियाज बाय योरसेल्फ. फर्स्ट दैट इज समन्स एंड वारंट. Summons and warrant, that is given from section 63 till 83 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी करना है प्रोडक्शन वारंट. प्रोडक्शन वारंट दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 302. तो जो भी मैं आपको सेक्शन लिखवा रहा हूं, ये सारे सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हैं. ठीक है, राइट? तो ये जो प्रोडक्शन वारंट होता है, ये बेसिकली कोर्ट ऑर्डर पास करता है, वारंट पास करता है कि जो एक्यूज्ड जेल में है उनको प्रोड्यूस करा जाए. तो क्योंकि जेल से अपने आप तो एक्यूज आएगा नहीं, उसको अगर बुलाया जाता है तो वो प्रोडक्शन वारंट के थ्रू बुलाया जाता है, जो कि सेक्शन 302 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट विच यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, दैट इज प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ये सेक्शन 84 से लेकर 89 तक है BNSS. ओके, पहले 82 में था, अब सेक्शन 84 है. 84 से लेकर 89. प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट. अब प्रोक्लेमेशन हम तब करते हैं, कोर्ट प्रोक्लेम्ड तब डिक्लेयर करता है जब एक्यूज को बुलाया जाता है और एक्यूज नहीं आता ऑन द डेट, कि जिस दिन बुलाया है उस दिन नहीं आया और पता चला कि वो भाग गया है, तो फिर कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देता है. और प्रोक्लेम जैसी प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है, चाहे उसने उसके सामने कोई उसको कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा हो या नहीं करा हो, बट जस्ट बिकॉज ही इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सो द पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड कैन बी ब्रॉट बिफोर द सो एंड सो कोर्ट. ओके, तो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, वो सेक्शन 84 से लेकर 89 तक है. ओके, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग. प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग, तो ये सेक्शन 94 से लेकर 110 तक दे रखा है. अब प्रोडक्शन में कि अगर मान लो पुलिस ने कोई चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करा है, सीज करा है, तो उसको प्रोड्यूस कराया जा सकता है बिफोर द कोर्ट. प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग में आएगा वो. ठीक है, 94 से लेकर 110 तक है. ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रिलिमिनरी टेस्ट, आई एम टेलिंग यू. हालांकि इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू रीड इट twice or thrice and you will be able to learn the section numbers as well. तो important है for your PT, production of a thing. आगे recording of evidences. Recording of evidences, that is given from section 307 से लेकर 335 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ओके, 307 से लेकर 335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की, जब एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं
तो फिर वो सेम लैंग्वेज में रिकॉर्ड होंगे जो उस कोड की लैंग्वेज है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। तो इसमें कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि एविडेंस के रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजंस रिलेटेड टू ल्यूनेटिक। प्रोविजंस रिलेटेड टू ल्यूनेटिक, कि अगर कोई एक्यूज पागल है, राइट, तो देखो पागल है तो उसको डिफेंस मिलेगा सेक्शन, टेल मी, आईपीसी की अगर मैं बात करूं, अभी भारतीय न्याय संहिता की बात नहीं कर रहा, अगर कोई व्यक्ति एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट और उसको बोला जाता है कि भाई ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, तो वहां पर तो उसको डिफेंस मिलता है। कौन से सेक्शन का मिलता है? इंसैनिटी, बता दो। आईपीसी का फटाफट बताओ, फटाफट। यस, आहा, उम्मीद आप जरा से चूक गए। सलोनी मुझसे पूछ रही है, कंफर्म कर रही है। सलोनी कह रही है सर इज इट 84? प्रिया कह रही है सर 84। ऑल राइट, सो यस इट इज सेक्शन 84। ऑल राइट, इन आईपीसी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी सेक्शन 84 वाज द कंप्लीट डिफेंस। बट यहां पर बात कर रहे प्रोविजंस रिलेटेड टू ल्यूनेटिक, कि अगर उसने ऑफेंस करा हो, ठीक है, वो तो बात की बात है कि वो उसने ल्यूनेटिक की वजह से करा या फिर नॉर्मल था, बट अगर वो ल्यूनेटिक है तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा, तो ये भी आपको पढ़ना है। ये दे रखा है सेक्शन 367 से लेकर 378 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, 367 से लेकर 378। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस यू हैव टू डू, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सेक्शन 379। ओके, फर्दर disposal of property, further disposal of property, okay, that is given under section 497 से लेकर 505। okay, next further एग्जीक्यूशन अब एग्जीक्यूशन 473 से लेकर 477 में आएगा। अब यहीं पर एक टॉपिक है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, कि अगर डेथ सेंटेंस दे रखा है तो उसको कम्यूट करा जा सकता है, कम करा जा सकता है टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट, और अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट दे रखा है तो उसको फर्दर कम्यूट करा जा सकता है फॉर 20 ईयर्स। ओके, तो वहां पर कम्यूटेशन की बात की गई है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट टॉपिक विच यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, दैट इज प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, दैट इज सेक्शन 168 से लेकर 171 तक है। सेक्शन 168 से लेकर सेक्शन 171। ओके, क्लियर? very very good, excellent. Now let us proceed further. So with these are the topics which you have to do it by yourself. Again I am reminding you that in case if you are finding any difficulties in these topics in order to understand, then you are free to consult me. ठीक है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो इन टॉपिक्स में अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ बेरा ट्रेडिंग है, कुछ ज्यादा इसमें समझाने वाली बातें नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट दैट ये जो टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं, दिस इज अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, इसको करना जरूरी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू कंप्लीट।
कि जो मैंने आपको लिखवाए थे वो और ये जो मैंने आपको लिखवाए ये आपको करने हैं। तो ये हमें सीआरपीसी में मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कंप्लीट करने। नाउ let us start with our first topic, that is jurisprudential essence of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये पहला टॉपिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट और jurisprudential essence of BNSS, that is the first topic. Correct me if I'm wrong. रूपल says yes, Shelly says yes, okay, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, make your first topic, make a heading, that is constitutional aspect or jurisprudential essence of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Okay, so my question to all of you is that what is the essence of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? What is the essence of BNSS? क्यों है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी क्यों है हमारे पास, बताओ। लेट अस डिस्कस दिस, लेट अस डिस्कस दिस। अच्छा मैंने रिकॉर्ड करा? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, जस्ट अ मिनट। यस नाउ इट इज रिकॉर्डिंग। टेल मी दैट व्हाट इज द एसेंस ऑफ BNSS? कौन बताएगा, बताओ। रूपल अनम्यूट करो और बता दो। Why do we require CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? Sir, it is a procedure हाँ for arresting a criminal, punishing him तो or आप her. कह रहे हो सर प्रोसीजर है अरेस्ट करने के लिए और हाँ जी सर। क्या करने के लिए बेटा? प्रोसिक्यूशन करने के लिए प्रोसिक्यूट करने के लिए। ओके और या फिर बेल देने के लिए, बेल देने के लिए और पनिशमेंट पनिश करने के लिए और सोचो सोचो। हाँ जी। कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? शेली, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? मिस शेली धीमान। All right, Shelly, I believe it. She is not able to hear us. कोई बात नहीं, we can proceed further. तो as Miss Rupal has said कि सर इसका जो एसेंस है सीआरपीसी या BNSS का कि हम अरेस्ट कर सकते हैं, कि अरेस्ट कैसे करेंगे ये BNSS में दे रखा है कि कौन सी चीजों में हम अरेस्ट करेंगे, इन विच सर्कमस्टांसेस द अरेस्ट कैन बी मेड, राइट, एंड फर्दर वी कैन प्रोसिक्यूट and how the prosecution will be done, that is provided in the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. And in that prosecution the accused are given the safeguards, क्योंकि the person is only an accused, he is not a convicted person, and since he is not a convicted person he is having his rights, उसके अपने अधिकार हैं, वो बाहर घूम सकता है। अभी एक्यूजेशन ही तो है, उसको प्रूफ थोड़ी हुआ है, तो he can be granted the bail as well. And if the accusation is proved beyond all reasonable doubt, then the punishment can be given. So how the punishment can be given, that is also provided in the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So basically अगर मैं इसका पर्पस बताने लगूं BNSS का, is that how the investigation will be done, right? क्योंकि if the offense has been committed, कि अगर offense हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करना है। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कैसे करेगा, उसमें क्या करना है, वो कौन बता रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बता रहा है, राइट। पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, एंड इन दोज इन्वेस्टिगेशन वी विल बी फाइंडिंग सम फैक्ट्स, एंड दोज फैक्ट्स हैज टू बी अ रेलेवेंट फैक्ट, एंड वो रेलेवेंट होगा या नहीं होगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताएगा। बट यहां हमें फैक्ट्स गैदर करने, हमें एविडेंस गैदर करना है, हमें एविडेंस कलेक्ट करने। क्या वो एविडेंस एडमिसिबल होगा नहीं होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताएगा, राइट। बट
कैसे एविडेंस को कलेक्ट करना है, कौन एविडेंस को कलेक्ट करेगा, कब करोगे, कितने बजे करोगे, किसके सामने करोगे, ये सारी चीजें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बता रहा है। एंड फर्दर वी विल बी प्रोसिक्यूटिंग द एक्यूज्ड। सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज गिवन इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। अगर मैं लिखूं कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज गिवन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। एविडेंस को कलेक्ट करना है। अभी एविडेंस रेलेवेंट है नहीं है वो बात की बात है, वो कौन डिसाइड करेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। बट हमें अभी एविडेंस कलेक्ट करना है, और कैसे करना है वो बीएनएसएस बताएगा, राइट। ओके, आइडेंटिफाइंग द एक्यूज्ड। एक्यूज को आइडेंटिफाई करवाना है, ये कौन बताएगा, ये भी तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताएगा, राइट। ये भी तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताएगा। वी हैव टू पनिश द एक्यूज्ड, ये कौन बताएगा, ये भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताएगा, राइट। वी हैव टू प्रोसीड और प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो द अल्टीमेट जस्टिस शुड बी डन टू द सोसाइटी। That is the broad purpose of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So the broad purpose of BNSS is to do ultimate justice. That investigation कैसे करना है, कौन करेगा, क्या कलेक्ट करना है, ठीक है, राइट। प्रोसिक्यूशन कैसे करना है, बेल अगर सेफगार्ड्स देने हैं हमें वो भी BNSS बताएगा, और इसके साथ साथ अगर पनिशमेंट देनी है तो कितनी देनी है, कैसे देनी है, राइट। जजमेंट देना है, अपील भी है, अपील के भी प्रोविजन दे रखे। सो दैट इज व्हाट दिस इज इन ऑर्डर टू डू जस्टिस टू द सोसाइटी, राइट। दैट इज द पर्पस ऑफ BNSS। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? सलोनी ठीक है, यश ठीक है, रूपल ठीक है, उमेद ठीक है, राखी ठीक है, प्रिया ठीक है, वेरी गुड हो गया, यू आर सो स्मार्ट। शैली ठीक है। तो यहां पर दो इंटरेस्ट आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। whenever the crime is committed, there are two interests which are always in conflict, and those interests are societal interest on one hand and individual interest on other hand. Individual accused or society as the collectively society, right? तो यहां पर जब भी ऑफेंस होता है तो दो इंटरेस्ट, दैट इज सोसाइटल and individual. So societal interest and individual interest are always in conflict, right? Societal interest क्या है? What is the society interest? The societal interest is that we shall identify the accused, prosecute him and convict him, put him behind the bars. कि हम accused को ढूंढे, पता लगाएं, उसको प्रोसिक्यूट करें, अरेस्ट करें और कन्विक्ट करें, ये हमारा सोसाइटल इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि मैं अगर एक्यूज्ड हूं, मैं अभी सिर्फ एक्यूज्ड हूं, अभी प्रूव्ड नहीं हुआ है मेरा, आई हैव माई राइट्स एंड यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट माई राइट्स आर्बिट्रेरीली। आप मेरे राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकते। हालांकि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी द इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैन बी कर्टेल्ड, कि सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए एक्यूज्ड के जो राइट्स हैं, आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आई हैव अ राइट टू मूव, आई हैव अ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, आई हैव अ राइट टू गो अराउंड, तो वो सारे राइट्स कर्टेल करे जा सकते हैं। समझ में आया, राइट। सो ये जो आपको हम जेल में डाल रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, आर यू नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई राइट्स? यस, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग दैट इंडिविजुअल राइट। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको हमने खुला छोड़ दिया तो सोसाइटी में तो एक फियर फैल जाएगा ना, एक डर फैल जाएगा कि यार ये व्यक्ति खुला घूम रहा है, ये जो ऑफेंस इसने करा है कल को हमारे साथ भी कर सकता है, तो बेटर है हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो अगर ये फियर रहेगा, डर रहेगा सोसाइटी में, तो आपको लगता है वो सोसाइटी एक वेलफेयर सोसाइटी रहेगी? दैट विल नॉट बी अ वेलफेयर सोसाइटी। तो सोसाइटल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इन ऑर्डर टू चेक
in order to consider the societal interest, the individual interest will always be curtailed, but that individual interest shall not be curtailed arbitrarily. Just कि आपको एक्यूज के राइट कर्टेल करने हैं इसलिए आप कर्टेल कर रहे हो, ऐसे नहीं है. अगर आपको उसको अरेस्ट करना है तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो. अगर आपको उसकी बेल डिनाई करनी है तो आपको रीजन देने पड़ेंगे कि बेल क्यों डिनाई कर रहे हो. अगर आपने रीजन नहीं दी तो आर्बिट्रेरीली हो जाएगा ना. समझ में आया? Accused also have the fundamental rights, right? Accused also have the fundamental right, but if you are curtailing that fundamental right arbitrarily, then that is wrong, that is unconstitutional. समझ में आया? But those fundamental rights can be curtailed in order to safeguard the societal interest, क्योंकि the societal interest is more wide than the individual interest, क्योंकि आपके एक अकेले को छोड़ने से पूरी सोसाइटी इज कलेक्टिवली अफेक्टेड. अब जो कोलकाता में जो ऑफेंस हुआ है, द रेप हैज बीन कमिटेड एंड ड्यू टू दैट देयर इज लॉट ऑफ द एंगर, द होल societal conscience has been shaken, right? And just imagine if that person, that accused has been left इन द सोसाइटी कि नहीं हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, तो क्या पूरी सोसाइटी आराम से जी पाएगी? नहीं जी पाएगी. द सोसाइटी विल ऑलवेज बी लिविंग इन द फियर. सो देयरफॉर दैट अक्यूज्ड के जो फंडामेंटल राइट्स थे दैट हैज बीन कर्टेड. सो दिस हैज टू बी डन, दिस बैलेंसिंग नीड्स टू बी डन, बट दिस बैलेंसिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. This curtailment of individual right shall not be arbitrarily. Got it? समझ में आया कि ये जो कर्टेल कर रहे हो आप, उसकी जो इंडिविजुअल राइट कर्टेल कर रहे हो, ये आर्बिट्रेरली नहीं होने चाहिए. अगर आप उसको बेल मना कर रहे हो तो आपको रीजन देने होंगे कि भाई बेल क्यों नहीं दे रहे, राइट? ओके. अगर आप उसको अरेस्ट कर रहे हो तो आपको रीजन बताना पड़ेगा आप उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हो. बट अगर आपने रीजन नहीं बताया तो फिर वो आर्बिट्रेरली हो जाएगा, then that can be challenged. So larger interest is the societal interest, and in order to prevent the societal interest, the individual interest can always be curtailed. It does not matter whether it is fundamental right or not. However, there is always one absolute fundamental right, that is Article 20. That shall not be curtailed. Article 20 clause 2 क्या कहता है? That there shall not be any double jeopardy. डबल जेओपार्डी का कॉन्सेप्ट है ना आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की. आपको एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए. यू शैल नॉट बी कन्विक्टेड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस. आपने एक ऑफेंस करा तो आपको एक ही पनिशमेंट होगी, वो आपका एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट अ पर्सन, दैट एन एक्यूज्ड शैल नॉट बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. तो ये भी एक क्या है? एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है. इसको कर्टेल नहीं कर सकते किसी भी हालत में. तो यहां तक समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? टेल मी. उम्मीद ठीक है. आई बिलीव देयर आर सो मेनी थम्स अप. इट इज क्लियर. वेरी गुड. तो इसमें केस लॉ लिखो माय डियर स्टूडेंट्स. राइट डाउन द केस लॉ. दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मेनका गांधी versus Union of India 1978 Supreme Court. ओके. तो यहां मेनका गांधी में बताया था कि ये जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स आप दे रहे हो अक्यूज्ड को, दैट शुड बी जस्ट, दैट शुड नॉट बी अनजस्ट, दैट शुड नॉट बी अनरीजनेबल. So whatever procedure you are following, that procedure shall be fulfilling the test of the spirit of constitution, the basic structure. कि वो जो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए, वो नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए. वो प्रोसीजर shall follow principle of natural justice. That procedure shall be reasonable procedure, right? On one hand, you are saying that investigation needs to be done.
interrogation needs to be done, and on other hand accused saying that I have a family to look after, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादी देखनी है, उनके घर देखना है, इसलिए मुझे आप बेल दे दो, राइट. I will not temper the evidence, I will not influence the witnesses, I will not run from the court. So now you need to do balancing from these two interests, and once the balance is done, then that balance has to fulfill the principles of natural justice, fairness, non-arbitrariness, reasonableness. ओके अब ये जो सेफ गार्ड्स है, अब जैसे सेफ गार्ड में आपको मैं बात करूं तो डबल जोपार्डी. अब डबल जोपार्डी नाउ इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 337, आर्टिकल कह रहा हूं सेक्शन 337 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अर्लियर इट वाज इन सेक्शन 300, और ये डबल जोपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दे रखा है. तो ये एक सेफ गार्ड ही तो है, राइट. ओके, दिस सेफ गार्ड इज फुलफिलिंग द फेयरनेस, इट इज नॉन आर्बिट्रेरीनेस, राइट. ओके, फर्दर एक और है, दैट इज प्लीडर ऑफ एक्यूज्ड चॉइस. प्लीडर ऑफ एक्यूज्ड चॉइस कि मेरे को, अगर मैं एक्यूज्ड हूं तो मेरे चॉइस का लॉयर होना चाहिए हु शैल डिफेंड मी. आई शुड बी गिवन अ चॉइस, दैट इज ऑल्सो फेयर, राइट. ऐसे थोड़ी एक्यूज को कोई सा भी लॉयर आप दे दो. लॉयर आप उसको बोल रहे हो तो उसकी चॉइस का होना चाहिए. पहले दैट वाज इन सेक्शन 303, नाउ इट इज इन 340. अर्लियर इट वाज इन 303, नाउ इट इज इन 340, राइट. फर्दर लीगल एड टू द एक्यूज्ड, लीगल एड टू द एक्यूज्ड, राइट. कि अगर एक्यूज्ड बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है टू हैव अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो वहां पर द लीगल एड शैल बी गिवन. एंड दिस लीगल एड अर्लियर इट इज इन 304, नाउ इट इज इन 341, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. So on one hand you are curtailing the rights of accused. curtailing कैसे कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, राइट. तो आप उसको इंटरोगेट कर रहे हो. एंड ऑन अदर हैंड यू आर ऑल्सो गिविंग हिम द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स कि देखो आपको अगर जाना है बेल पर तो आप बेल अप्लाई कर सकते हो. दैट इज अ प्रोसीजरल सेफगार्ड, राइट. ओके, इज इट क्लियर. आपको अगर आपका लॉयर चाहिए तो आप अपनी पसंदीदा लॉयर को बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, राइट. एक और प्रोसीजरल सेफगार्ड है कि अगर मैंने आपको अरेस्ट करा है तो आई कैन नॉट कीप यू इन माई कस्टडी फॉर मोर देन अ रीजनेबल टाइम, एंड दैट रीजनेबल टाइम शैल नॉट एक्सटेंड 24 आवर्स, एंड आई हैव टू प्रोड्यूस सच एक्यूज्ड बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड है, या फिर आई कैन नॉट कीप, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट कीप द एक्यूज्ड in his custody for more than 24 hours, that is given. Earlier it was in section 57, now it is in section 58. अब section 58 में है, और 24 आवर से पहले मेरे को उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. नीड्स टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. पहले सेक्शन 167 था, अब सेक्शन 187 है. प्रोड्यूस हिम बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 187, और वहां 187 में आप डिफॉल्ट बेल का भी कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये जो डिफॉल्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल सेफगार्ड गिवन टू द एक्यूज. सो दिस प्रोसीजरल सेफगार्ड, व्हाई वी हैव क्रिएटेड प्रोसीजरल सेफगार्ड, दैट इज इन ऑर्डर टू डू द जस्टिस, द बैलेंसिंग नीड्स टू बी डन, राइट. तो ये जो प्रोसीजरल सेफगार्ड हमने बनाए हैं, ये हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम बैलेंस कर सकें, राइट. ओके, सो इट हैज टू बी बैलेंस्ड विद द इंडिविजुअल राइट एज वेल एज द सोसाइटल राइट. अब सोसाइटी का क्या राइट है कि भाई एक्यूज को ऐसे नहीं खुला छोड़ना चाहिए, राइट. बट वहां एक्यूज ने कुछ ऐसा
वीडियो दिखाया जिससे पता चल रहा है कि वो इन्वॉल्व था ही नहीं, तो आप उसको बेल पर छोड़ सकते हो, राइट? ओके, समझ में आया? प्लस एक और प्रोसीजरल सेफगार्ड है कि भाई मैं प्रोसिक्यूट कर रहा हूं बट मैं आपको मौका ही नहीं दे रहा बोलने का, आपको मैं मौका नहीं दे रहा डिफेंड करने का, तो वो तो ग्रॉस वायलेशन हो जाएगा ना। सो देर इज व्हाट, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नाउ व्हाट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, बता दो। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, right to be heard, hearing both parties. Very good. That audi ultram partem means that it is the right of fair hearing, right? कि दूसरी पार्टी को भी सुनो, right to right of the other party to be heard, ठीक है? दैट इज व्हाट ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि आप दूसरी पार्टी को भी सुनो। ऐसा थोड़ी आपने बस मैंने आपकी सुनी और आपके कहने पे ही मैंने डिसाइड कर दिया। अनटिल एंड अनलेस दूसरे पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी बट वो आया ही नहीं, या आया बट उसने डिफेंड ही नहीं करा, तो मैं एक्स पार्टी चला दूंगा। समझ में आया? तो आई हैव टू गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द अदर पार्टी टू बी हर्ड। If I do not give the reasonable opportunity, then such procedure shall be a gross violation of the basic structure of the constitution. Okay, एक और है nemo judex in causa sua. Now what does it mean? Nemo judex in causa sua. Tell me. Very good, Saloni. Very good. Excellent. Priya says no one should be a judge in his own case. Very good. So no person can be a judge in his own case. Right? That is what it means. Nemo judex in causa sua. तो ये कुछ क्या नाम है वो है लीगल मैक्सिम्स है which you need to remember. Right? This can be asked in your exams. तो बेसिकली ये हमारा पर्पस है किसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। और अगर मैं ये बात करूं कि सीआरपीसी जब था वो ठीक था, फिर हम बीएनएसएस क्यों लेकर आए, तो आई विल कंक्लूड ओनली इन वन सेंटेंस दैट इन ऑर्डर टू इलेक्ट्रीफाइंग एवरीथिंग। तो पहले जो सीआरपीसी था दैट वाज वेरी वेल कॉम्पिटेंट, but since it was not expressly mentioned about the electronic evidence, electronic procedure, about electrification, and now with the time, right, क्योंकि अब टाइम के साथ चीजें बढ़ रही हैं और everything is being done online, so needs to be done this, कि जो प्रोसीजर है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हो सकता है, और ये एक्सप्रेसली लिख दिया गया है। Right, so there is no such change as such in CRPC and BNSS. It's just that in BNSS they have expressly mentioned a lot of things and few tweaks has been done. बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें इन्होंने चेंज करा है, और थोड़ी थोड़ी चीजें क्या चेंज करी हैं वो मैंने कुछ समय पहले एक स्पेशल क्लास हुई थी वहां मैंने आपको बताया था। बाकी हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, समझ में आया एवरीवन? ओके, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। इसमें आप एक पॉइंट लिखो, राइट डाउन वन पैराग्राफ, आई विल डिक्टेट यू दैट द पर्पस ऑफ बीएनएसएस the purpose of BNSS is to collect evidences and to provide for the proceedings against the accused and also to see
whether the accused, and also to see whether the accused is guilty or not, is guilty or not, full stop. A crime is considered to be a wrong, a crime is considered to be a wrong against the society, against the society, and therefore it is the state, and therefore it is the state which prosecutes the offender. Which prosecutes the offender. Which prosecutes the offender on behalf of the society. On behalf of the society. The burden of proving the guilt the burden of proving the guilt of the accused would lie upon the state. Would lie upon the state. Write down further. It is the cardinal principle. It is the cardinal principle of a criminal law. Of a criminal law. That an accused will be deemed to be innocent unless his guilty is proved. Unless his guilt is proved. ओके तो ये वही चीज है ना कि भाई अभी तो मैं एक्यूज्ड हूं, आई एम नॉट अ प्रूवन गिल्टी, सो सिंस आई एम एन ओनली एन एक्यूज्ड आई हैव माय राइट्स, क्योंकि सिर्फ मैं अभी एक्यूज्ड हूं तो मेरे राइट्स हैं. कौन से राइट्स की मैं बात कर रहा हूं? मेरे फंडामेंटल राइट्स, राइट. एंड दैट फंडामेंटल राइट कैन बी ग्रांटेड, but that has to be done a balance with the societal interest. ठीक है, तो इसमें लिखो, राइट डाउन that thus when action is taken is taken against the accused thus when the action is taken against the accused, he is not yet proven or proved to be guilty. Still his right to life and personal liberty is curtailed. The justification of that lies
the justification of that. Oh, just a minute, there is a power cut. All right, so there was a power cut due to which there was disturbances, but I believe since I'm audible, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। आई बिलीव शायद रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है, रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्ड चल रहा है, आगे चलते हैं। वेरी गुड। सो द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट lies in the societal interest, involved in the prosecution and punishment of the actual accused, and the punishment of the actual accused. Okay, write down further. However, the fundamental right of the accused are secured by Article 14, you lost, आई बिलीव मेरी आवाज आ रही है? कभी कभार ये ना नेटवर्क इशू कर जाता है, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम, है ना, आगे चलते हैं। However, the fundamental right of the accused are secured by Article 14, Article 19, Article 20, 21, 22, etc. However, all these fundamental rights, are not absolute, except Article 20 and Article 22, and therefore the rights of the accused can be restricted. Okay. Furthermore, but an arbitrary action against the accused cannot be taken the basic structure of the Constitution has implicit in it that certain principles like natural justice, reasonableness,
reasonableness, non-arbitrariness, fairness, etc. cannot be violated in any circumstances. In any circumstances. ठीक है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, रीजनेबलनेस है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस है, फेयरनेस है, ये किसी भी सर्कमस्टांस में वायलेट नहीं करी जा सकती. राइट? ओके, आगे बढ़े. राखी लिख रहे हो आप बेटा? समझ में आ रहा है राखी आपको? राखी को आ रहा है, वेरी गुड. सलोनी शैली राखी, ठीक है, यस ठीक है. आगे लिखो फर्दर. It has been clearly held. It has been clearly held in Menaka Gandhi versus Union of India 1978 Supreme Court that the procedure established by law under Article 21 cannot be any and every procedure, cannot be any and every procedure, comma, it has to be non-arbitrary, it has to be non-arbitrary. All right, Priksha, kindly take care of yourself, no problem. It has to be non-arbitrary. It has to be non-arbitrary, comma, fair, comma, just, and a reasonable procedure. And a reasonable procedure. Okay. There has to be adequate, full stop, there has to be adequate procedural safeguard. Light is not there. Adequate procedural safeguard provided to the accused. Next para. Nowhere in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, nowhere in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता can the principle of natural justice, can the principle of natural justice be violated. The entire भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, the entire BNSS is an amalgamation of the proceedings to find the real culprit,
culprit, to find the real culprit and the proceedings for restricting the rights of the accused and at the same time providing for adequate safeguards to the accused. Okay, is it clear? So this is the jurisprudential or the constitutional aspect of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि हमारा ये BNSS या CRPC, फॉर्मली इट इज नोन एज CRPC, ये क्यों है. तो आई बिलीव ये समझ में आया कि ये क्यों है, हम क्यों पढ़ते. टेल मी, क्लियर है? क्योंकि नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज the inherent powers of high court. but ये जो inherent powers हैं, ये वाला topic I am in opinion that I shall take in a fresh class, that is tomorrow. Tell me, should we continue right now or should we take it tomorrow? I am letting it on your opinion. Write it down. Okay, Rupal says tomorrow. What about others? Shelly says tomorrow. ओके यूनानिमस डिसीजन आ रहा है क्या? यूनानिमस डिसीजन. रूपल सेज टुमारो, शैली सेज टुमारो, यश सेज नेक्स्ट क्लास. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? राखी सेज टुमारो. ओके, तो ये तो यूनानिमस डिसीजन हो गया ना. सलोनी सेज थम्स अप, सो आई बिलीव दैट शी इज आल्सो सेइंग टुमारो. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. तो कल हम ये इनहेरेंट पावर पढ़ेंगे of the high court. Tomorrow we will be discussing this, right? कल कई सारी चीजें we will be discussing, so therefore tomorrow's class is equally important. Do not miss. And जिन बच्चों को रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, आई एम अगेन रिपीटिंग, हालांकि मैंने ग्रुप में डाला था कि जिसको क्लास रिकॉर्डिंग चाहिए BNSS की, काइंडली सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल शेयर द लिंक विद यू. ऑलराइट, ओके, thank you everyone, god bless you, we shall meet tomorrow. Thank you.